We connect. Hello. Hi guys, am I audible? Hello. Yes, sir. Yeah. Just one request: if any one of you can like share the link to the meet in the WhatsApp group that we have, so others can also join. But please do that once, and we will be starting by 10:15. हेलो सर। Yeah. लार्जर नंबर रुका हुआ है, वो प्लॉटिंग तो क्लियर हो चुका, वो आप वो करा दीजिए। Larger number कराते हैं एरे larger एरे में एरे में number भी कराते हैं.
Okay. Yeah, guys. So let's start with today's class, right? So, okay. So two students have asked about their doubts. Yeah, guys. Please, Vivek, let me know of the doubt you are talking about. सर am I audible? Yeah, you are audible. सर जैसे कि मतलब अभी ये मैट्रिक्स का डायगोनल्स का सम निकालना था, तो मतलब एक मतलब दोनों डायगोनल्स का, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी। तो मैंने क्या किया, पहले एक मतलब फर्स्ट डायगोनल का सम निकाला, उसके बाद मैट्रिक्स को रिवर्स कर दिया, उसके बाद में सेकंड डायगोनल का सम निकाला। लेकिन सम ऐसा निकालना है कि जो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो नंबर सेकंड टाइम नहीं आना चाहिए। वो कैसे करने का सर? सेकेंड टाइम नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब एक बार डायगोनल निकाला तो बीच में वो नंबर वापस से आएगा जब डायगोनल निकालेंगे उसका सम, तो वो नंबर को छोड़ के बाकी सब डायगोनल का सम निकालना था। अच्छा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। लाइक आई गेस द ओनली इशू यू वुड बी फेसिंग इज इन द केस ऑफ ऑड लेंथ मैट्रिक्स, राइट? अगर n क्रॉस n ऑड है, राइट? तो उसमें आप यस क्या सर। करोगे? सेम सेम ले लोगे, बस व्हेन यू आर लाइक कैलकुलेटिंग फॉर द सेकंड टाइम, राइट? आफ्टर डूइंग like some operation. So on the second time when I is equals to j, at that time you just need to basically skip that element, right? So उससे क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, वो नहीं कंसिडर होगा, राइट? तो लेट्स से अगर हमारी असाइनमेंट में है क्या ये प्रॉब्लम? 2D आ रही नहीं सर, जिम में। जिम में है। तो चलो ठीक है, इसको ना मैं क्लास के बाद आपको ना बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है? मैं को एक बार ओके रिमाइंड सर, कराना, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? ठीक है ओके। सर। या गाइस, आई गेस लास्ट टाइम वी कवर्ड the strings assignment, right? I asked you about the doubts in the string assignment and you guys like said ki, okay, so we are done with that now. So for today we have a functions program, right? Any question that other sir has taken already, right? Anyone? Right, Sir, let's most of us are basically finding problems in date section. can you just repeat what you said? Finding problem In the string section, question known as date. okay, date. Date. I can't see any date kind of Sir, question here. that belongs to gym section, I think. Okay, so yeah, that's if it is gym problem, right? I guess guys, please like coordinate with your batch manager and she will be like fixing the one-to-one mentorship session, right? For the doubt solving class, let's basically focus on the assignments, and still if we have some time afterwards, I can spare like 15-20 minutes and then we can discuss it, right? But initially let's discuss the assignment. Yeah, who's this? Sir, can you explain the calculate NCR problem? I didn't understand that problem. Okay, calculate NCR, this one, right? Yeah. Okay, so guys, this is the problem for the functions part, right? This is the functions problem. So by now, I believe you guys might be knowing how to write the functions. Am I right? Or are there any doubts still? Guys, please, like for today, unmute yourself and then talk. I won't be able to like keep an eye out on the chat. Okay. No doubt. Okay, so I guess if the function part is clear, right? See, what is NCR? What is the formula of NCR? Anybody can let me know. What is the formula of NCR? N factorial by R factorial into N minus. So I guess it is, as someone was saying, N R factorial factorial by divided by N minus N R minus R factorial. R factorial, right? So do we have an R factorial also? No, I guess we don't have, right? Let me just once confirm it because I'm having so, yeah. N minus R factorial. Yes, we have an R factorial also, right? So you can The see denominator that, you should multiply with R factorial. okay, yeah, I got it, right? So this one should be a multiplication of an R factorial as well, right? So now you can see there is
one thing in common in these three terms, right? That is, we are finding the factorial of some number. Now we can like modulate it and write a separate function for it. Like I can write a static int, right? Static int, let's write factorial, in which I need to find some sort of a number, right? Let's say int x ka factorial chahiye, right? Now what I can do is I can basically start with an answer, right? For what should be the starting value of this answer, I can say 1, because 1 is the multiplicative identity of any element, right? Anything multiplied by it stays as it is, right? Also, then we need a for loop, right? Why? Because we need to go from x to 1, right? For int I is equals to x, I is greater than 0, I minus minus. Just simply do this. Answer is equals to answer star I. Got it? This is the formula. This is the for loop that is helping me find the factorial. After this, I have like, okay, so I have started creation of the answer of factorial. Now I just need to return it, right? RETU, return answer. Now you can see this function fact is helping me find out this part, factorial part, factorial part, factorial part, right? Apart from this, we need to now figure out, okay, so what is the NCR that we are currently finding? I believe we need a scanner first, right? Scanner SC is equals to new scanner system dot in, right? Now, what are the inputs that we require? See, in the example, you can see we have two inputs. First one being the N and second one being the R, right? Write a program that find given N and R. So I can basically say, okay, so first thing I need is N, that is equals to SC dot next int, right? Int R is equals to SC dot next, right? Now I know what are N and R, right? What I need to do now, right? I need to figure out, okay, so what is N factorial, what is R factorial, and what is N minus R factorial, right? So let's create these values as well, right? So if I create, what should be the name of the variables? Let's take a capital N for N factorial, right? So N factorial is equals to, please give me the factorial of N, right? After this, int R is equals to, please give me the factorial of R. After this, I can basically have a third variable that will be representing N minus R factorial, right? Let's basically name it Z, right? Let's keep it capital Z, is equals to factorial of N minus R. Okay. Now what we need to do is we need to simply do this. System dot out dot print ln, right? N factorial, that was capital N divided by, right, divided by Z into R, right? See what is happening. I have extracted out this factorial part, right? The concept, San, can you increase your volume? Yeah, Mohit, this is the best that I can do, right? Am I audible now, guys? यार देखो कोई दिक्कत आ रही है ना तो एक बार अनम्यूट करके बोलो, राइट? आज मैं देख नहीं पाऊंगा आपके चैट्स. So please repeat the concept on of formula at line 7. See, Sushant, see, okay, so yeah. So line number 7 पे ये formula क्यों use किया है? See, this is the mathematical formula of factorial, right? If you go to the Google formula for NCR, right? It's a standard formula. Yes, it's sir. nothing new. हाँ. सर Right, ये तो तो इसका तो कोई यूज ही मतलब इसे तो कमेंट कर दीजिए. हाँ, वो तो मैंने लिखा हुआ था ना, वो तो मैं आपको बता रहा था, वो तो अभी मैंने सबमिट थोड़ी करा यार. ओके सर. ठीक है. ओके सर. Yeah. Any other doubts? Any doubts apart from this? See, let's just walk through with the code once, right? After that, please. Hello. Hello. Yeah. Sir, could you go with the question of in the function find the first and last position of elements in sorted array?
Yeah, I can do that, but please let me just complete this function first, right? Some of you guys asked for this problem, so let me just help them out, like solving it, and then we can like move to the next problem, right? Okay, fine. Yeah. Okay. See what is happening. Ki scanner a creation of scanner, right? And then taking in n and r. After this, I basically took these three variables that I created, n representing the n factorial, right? This is the n factorial. Okay, this is the r factorial, and this is n minus r factorial, right? So after this, we know the formula. I created a simple factorial function that I extracted out the functionality of finding the factorial, right? Starting from x value of x, going till 1, multiplying it, right? How factorial is found, n into n minus 1 into n minus 2 and 1 up till n 1. Right, simple creation of factorial and then simple return of the answer that I created, right? Or the factorial that I created. Now the values will be stored in the respective variables n, r, and z, and then I'm simply printing out whatever the computation I get from the formula. That is this one, right? Putting the respected values as it is. So let's check if it is working or not. Right. So you can see we got the correct output as 3. So let's try and submit it. Okay. So 5 of the test cases failed. Now, what could be the main reason for this? If anybody is able to figure out, yes, the Use long. Long, sir. So yes, we need to use long. Why we need to use long? See, whenever we are dealing with multiplications, integer has a tendency to basically overflow, right? So it's always better to use long, right? So even though the logic is correct, just because of the integer overflow, the output came out to be wrong. Okay, so let's try and submit. Still. Okay, so yeah. Yeah. So any doubts now in this problem, right? Any doubts now in this problem? Anyone? Sir, any doubts? Sir, Yeah. where did we use n or n minus or? N or? N minus or. How can you return this? Like, see, you are like pushing and talking. Please complete your statement and then like unmute yourself. Like, Hello? yeah. Hello? Sir, how can you return these values n or n minus? Because we didn't mention n or n minus or in previous function, in the above function. See, how does function works, guys? See, how does function work? Function is a function basically means it's a code that is like written to perform a specific task, right? Now you can see I have written this function. Now what is a function definition is having? It's having a long as the answer, right? It's the local variable for this function. Inside this function, it has its working, and at the end, it's basically returning whatever the computation it did, right? So it basically performs the same action, right? That is finding out the factorial. This is the logic of finding the factorial, right? Now, I'm just calling this function with different inputs, right? You can see I'm first calling it for n, then for r, and then for the n minus r. Now this n gets passed to this x, right? Now this n's value is passed to the x, and the computation is done on this x. You can see I'm using the variable x here, start I from x. So that like this, I'm able to call the same function with different variables. Now you are saying where are we like handling separate cases in the above function? It's pretty much not required. What is required is key. Okay, you write a function that performs a specific operation, just pass a variable to it, right? The function will itself take care of like computing the answer for different values, right? So first time n was passed to x, r was passed to x, and then n minus r.
the value of n minus r, right? Let's say n is 3 and r is 2. So the value 1 will be passed to x and the factorial of 1 will be calculated. Okay. So this is how basically functions work. Now, if I was to like basically, why don't use public in line number 10? Okay, Manmoh, see what public does is ki public basically allows it's a concept of object oriented programming in which we have like private and public members, right? Now public members can be accessed with by any variable or sorry any from anywhere, right? Whereas private can be accessed just in the class, right? So it's not like pretty much required to write a public in this one, right? It's just an access specifier. Okay, public and private are concepts of object-oriented programming. Like, Vikram, if you were trying to say something, your mic was like really buzzing out. Vikram, you are not audible. Right, please write it in the chat. Yes, sir, it's clear, sir. Something is. Yeah, it's clear, sir. Okay, what is clear? Like concept or the audio? Concept is clear, sir. No, audio is also okay, sir. Okay, all right. Yeah, but can I use? Yes, you can use public as well, right? Public static long. See, if I do public, right? It basically doesn't like affect the functioning of the program, right? It's something to just do with the access or the visibility of that, right? You can still see key. I got correct submission, right? Yeah, it passed. Okay. So I believe I answered all your doubts in this question. Is there anyone still with any doubt? Please let me know. Yes, sir. Yeah, who's this? The spiral matrix, traversing matrix. Traversing a matrix, right? It was a question of 2D arrays, right? It's a 2D array. So I guess I took a whole 1 hour long lecture on that problem, right? So I'm not like going to repeat it because it requires a 1 hour long build up to basically get to the code, right? The guys who were like attending that class know what like required to do. So सर मैंने see, sir, hello. से lectures में ढूंढा Hello, Sorry? sir. और मुझे मिला नहीं भाई. Hello. Yes, sir. Yes, sir. I was saying that can you give us the date of that particular means No, lecture? sir. On यार which मेरे को date? ना यार मेरे को Hello? सही में याद नहीं है. I guess the last class से last class, right? I guess Thursday होगी. 2-3 days before. हाँ मतलब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इन 3 क्लासेस में देख लो. उस पूरी क्लास में Okay. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हुआ था, स्पाइरल. ठीक है, Okay. वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, उसको समझाने में टाइम लगता है. Okay, sir. We will see to it. राइट. सो Sir, could you please Yeah. open the functions and switch gear? सर फंक्शन में सर अपन दो चीज कैसे रिटर्न कर सकते हैं एक साथ सर मेन में? हेलो सर. सर एक जो स्पाइरल ट्रैवर्सिंग मैट्रिक्स है, हाँ तो सर इसका कोड आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में, खुद से समझ लूंगा. यार. स्पाइरल का मैंने कोड तुम्हें दिया था, व्हाट्सएप पे डाला था मैंने शायद यार. अभी मेरे पास है नहीं यार कोड. रुक जाओ, मैं एक बार शायद देख लेता हूँ. एरेज में पड़ा होगा. Sir, in loops there is a question. जस्ट अ सेकंड. ये आरेगा सर. तो 2D एक सेकंड 2D आरे में स्पाइरल का ना. यस सर. यार इसका कोड आएगा नहीं ना चार्ट पे, दिक्कत ये है. जैसे मैं कॉपी कर लूंगा भाई, वो आप पेस्ट कर दीजिए. You अरे, can मतलब- take the screenshot now. Now it's. Yeah, I would suggest also कि like please take the screenshot because if I share ना, it will be split into 2 parts, right? Let me just try see what I'm seeing. यस सर. वेट एक मिनट से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं. ले लो. सर नीचे कर दो. ठीक है. यस सर. ओके. इसका एक बार ना कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट सीधा मत काम करो, राइट? नहीं सर, एक बार पहले चेक करूंगा, उसके बाद कोड को समझ.
Okay, so we were discussing the functions, right? Let's stick to the function. Okay, so one problem solved. Which problem should we take next? Sir, please go with find first and So last find position first of and elements last is not element. correct. Acha, okay guys, Find see, first. first and Still, I last didn't में एक understand the question. see there is one problem in the first and last position of the sorted array, right? See, the actual solution of this problem is using binary search. Okay, so there might be the case where you are like writing the correct code. I agree to that, but some test cases might be failing, right? Why is that? Because the actual solution is of n log n of log n complexity, right? But the code that you would be writing is of n complexity, right? So if अगर कुछ ऐसा भी दिक्कत आती है तो उसको घबराना नहीं, कोड आपका सही हो सकता है, right? But the actual solution for this is the most optimized one is using binary search. Now the binary search is a topic of module 2, although it can be done using these linear search also, but the actual answer is of like binary search. Okay, Sir, yeah. इसमें एक चीज पूछने थे, जैसे Sir, अपन but सर could कुछ you please रिटर्न करते explain हैं the ना question in progress, sir? सर एक कहना एक टाइम पे यार, सर कुणाल एक सेकंड यार. हाँ कुणाल बोलो. सर, जैसे अपन कोई भी चीज रिटर्न करते हैं ना सर, वो कोई भी हाँ डेटा टाइप्स है, तो दो चीज कैसे रिटर्न कर सकते हैं? जैसे अब इसमें फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करना और लास्ट इंडेक्स रिटर्न करना, तो दो चीज एक साथ मेन में कैसे रिटर्न कर सकते हैं? तो क्या उसके लिए पॉसिबल? अलग अलग फंक्शन होना पड़ेगा, उसके अलग लिए फंक्शन, तो दोनों को अलग like अलग बना. like see दो what you फंक्शन can do बनाने is पड़ेंगे. नहीं, see what you can do is either the main approach is कि either write a first program that like basically helps you to find the first position, and second program that helps you find the last position, right? That's one way. In that you will be able to like send the index of one element, right? A single integer can be sent. Now if you want to send like multiple data along at once, you can like basically use an array to return it, right? You can create an array of size 2 in which at index 0 you can like put the first location, and the index 1 you can put the last element location, right? So that way you will be using a single data structure that is an array, and you will be sending multiple returns, right? Got it? अगर हम सीधा int और long करते तो एक टाइम पे एक वेरिएबल जाता, उसकी जगह अगर उसको array बना देंगे तो एक साथ में हम मल्टीपल लाइक सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर्स को भेज पाएंगे. अगर डिसिमिलर डेटा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर का डेटा देना है तो देन वी नीड टू क्रिएट अ स्पेशल क्लास फॉर इट, राइट? एंड देन वी विल बट सर एरे रिटर्न नहीं होगा सर. array रिटर्न हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ. हाँ सर, एक छोटा सा वो दिखा दो ना ताकि मैं क्लियर हो जाए. Okay, so let's right, so which problem should we take now, right? I'm like asking you guys factorial of a count frequency number. count frequency number. चल एक बार ये देख लेते हैं count frequency of okay, given right, okay, so given a number and a digit d, write a program to how many times the digit d appears in the number n. Okay, so we need to figure out the frequency of the element, right? So let's okay guys, please keep yourself on mute, right? If that is possible. Okay, yeah, cool. Someone take this screenshot of the spiral browsing ground. Can you paste it here? Okay, no worries. See guys, let's basically try and figure out how many ways we can do it, right? So I will be showing you both the ways, the normal, the coding way that we are doing so far, like the single block code, and then the functional code, right? So let's first take in the inputs, right? So the number can be of pretty huge size, right? 10 to the power 9. I guess it should fit in the size of it. So let's create a scanner, right? Scanner sc is equals to new. Got it. Let's take the integer n is equals to sc dot next int. Okay, so sir, sir has given the code. Yes. Okay, guys, कोई बात नहीं, मैं आपको ना स्पाइरल का कोड थोड़ी देर में मतलब कल तक भेज दूंगा, व्हाट्सएप में भेज दूंगा. ये तो अभी शाम को थोड़ी देर में. Okay, so see what is required is we are given a number n and a digit d. Now we have to find how many times the digit d appeared in the number n, right? So see, if you see the example case, you can see we have a pretty huge number 1 1 1 1 2 1, right? We need to find how many times 1 appeared in.
So 1, 2, 3, 4, and the 5th time, right? So the output came out to be 5. Now for this, we can like basically do, let's first do it in the normal way, right? So I guess we need first a count variable to basically keep track of how many times that number occurred, right? After this, I need a while loop, right? See, the code I will be writing now is like it will be like pretty useful to you in various problems. So please try and understand this one pretty really well, right? See, we need to perform this while loop till we have the number, right? Some sort of a number, and that is greater than 0, right? Now, what we can do is let's figure out, okay, so what digit we are like currently working on. So let's say ki x is equals to n mod 10. Now, what does this line mean? This line basically mean, okay, so we are now working on this digit. Let's say ki 1, 1, 1 and 2, 1, right? Now, modulus 10 will be giving me the value at the 1th place. Agreed? I will be getting a 1 in x. So I basically extracted out a digit from a huge number, right? Now I can basically check is x is equals to the digit d, then we can basically do. Let return last value. Yes. Yeah. Okay. So apart from n, we also need a d, that is not next. Right. It's also d. Now. Okay, so I basically worked upon the last digit, right? Now I also need to remove it, right? How can I remove it? I can basically do n is equals to n by 10, right? So n by 10 basically removes the 10th or the 1st place digit, right? Now we can simply check if the x is equals to d, right? If the digit that we extracted is equal to the digit that we were like finding, so please increment the count. So count plus plus. Right. After this, I guess this while loop will be helping me to basically find out how many times the digit occurred. So SY is system.print. Yeah. सर इसको फंक्शन में करना था ना, फंक्शन बना के. हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ कि actually what is the difference in single block code and the function code, right? Okay, so I guess pretty much every scenario we handled, right? Let's try and run. Let's basically figure out if there is any error. Okay, so it's working and we got the right output. Okay, now any doubt in this part, right? I believe कि अभी तक तो यार आपको इतना आना शुरू हो गया, right? Function कैसे काम कर रहा है? Sir, you must have asked us to vote, sir. As your presence is more important, we would have asked some other important question. Guys, I really asked someone like really said me कि ये problem कराओ, तभी मैंने कराया, मैंने खुद से नहीं कराया. Okay, so देखो यार, जो चीज तुम्हारे लिए इजी है ना, वो हो सकता है किसी और बच्चे के लिए ना इजी, तो ऐसे मत जज करो कि यहाँ पे जो करा रहा है वो वेस्ट हो. ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि सबको हो सकता है प्रॉब्लम बहुत इजी है यार, बट किसी बच्चे ने पूछा तो उसको भी तो बताना जरूरी है ना, वो भी इक्वल कैंडिडेट है सीखने के. ऐसे नहीं कि सबके लिए वो होना चाहिए. असाइनमेंट का क्वेश्चन है, मैं असाइनमेंट के बाहर का नहीं ले रहा, कुछ तो वैलिड है भाई, ले लो. Okay. Yeah, so I guess see, the code is simple. Now if we just yeah सर अगर हमें हर एक डिजिट का फ्रीक्वेंसी काउंट करना पड़े तो कैसे करेंगे? Okay, so if you want to count the frequency of every digit, right? So what you can do is you just need to figure out, okay, so what is the largest see, at your level, what you can do is you can use array to do that, right? You can just figure out, okay, so in the given number, what is the greatest digit that I can have, right? So let's say let's talk about in mathematical terms. In mathematical terms, we have a digits from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So I know ki the spectrum is from 0 to 9. So I can create an array of size 10, right? That will be providing me the indexes from 0 to 9. So using the same concept of extracting the 1th place option, I can basically extract out, and I can simply, rather than doing a count plus plus, I can increment the index at basically that index of the array. So that way I will be able to track all the occurrence of every digit in the number, right? Okay, so that is one way. The another way is using maps. So that
approach you will be like learning in the उसमें module 2. Okay. सर Yeah. सर ये लाइन नंबर 14 में जब हम लोग n% 10 करेंगे तो हम लोग को इससे लास्ट डिजिट मिल जाएगा. Yes, basically n factor n modulo 10, what it does is modulo basically gives us the remainder, right? So if I'm dividing something with 10, it basically helps me to get a remainder at 1th place, right? अगर वो 0 है तो 0 मिलेगा, अगर कोई और डिजिट है तो डिजिट मिल जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद 15 लाइन में क्या होगा? 15 लाइन में मैं उसको डिवाइड करते रहूं, मैं उस डिजिट को हटा दे रहा हूँ. यहाँ पे तो सिर्फ एक्सट्रैक्शन होगा, वहां पे मेरे को सिर्फ वो डिजिट मिलेगा, पर यहाँ पे एन पे मैं वो स्टोर कर रहा हूँ. तो मतलब यहाँ पे मैं वो 1th प्लेस का डिजिट हटा के स्टोर कर, राइट. ओके, यहाँ पे मैं डिजिट निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिजिट स्टोर करके फिर से हटा के वो नंबर स्टोर कर. Sir, do this code will work for counting the frequency of different number also? If we are not comparing the value with the remainder, or by applying some more operation. See, you basically need to figure out ki what digit you are like currently working on, right? It's not about ki using modulus or remainder. It's basically the concept is ki whether you are able to extract out the number, right? There are several ways, right? One way I can like tell is, if apart from this modulo is, please convert this to a string, right? And then you can like basically iterate over that string using the character at wala scenario, extract out the index and like increment that, right? So there are several ways to do this, right? The main concept that is used is pretty much same. Key extract out the digit that you are currently looking at, and then increment its frequency, right? Now frequency can be managed in several ways as well, right? Here we only wanted to like find out the frequency of single digit, right? That was digit D. Let's say ki there are several digits. As someone asked, okay, so how can like we keep a track of all the digits that we want of the frequency? So in that case, create a array of the largest size possible, so that you can like keep a track of every element that is occurring. And that is just increment the index of that element, right? Okay, so that there are several ways to basically keep a track of frequency. Okay, I hope I answered your query. अगर नहीं समझ आया, अगर कोड देखना है तो वो भी बताओ, वो भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. राइट, लेट्स जस्ट फिनिश दिस प्रॉब्लम. राइट, सो सी गाइस, अगर इसको सबमिट करते हैं as it is, right, it's not a functional code, right, it's a simple code, right, it gets accepted. Hello, apart from that, let's how to create it as a function, right? Let's create a static code. Static int, let's create a let's call it function, right? Let's call it function, and let's give it an integer n and an integer d. Right, now if I just cut this part, right, and I just paste it here, see the functional core of a program, I just replaced it, and like I just shifted it from the main to a new function that I created, right? So the same operation will be performed here. Now instead of like simple printing, I just need to return it, right? Return call. Kyun? Kyunki ab see, now the main call, the call will to the function will be me. The control of the program execution will be passed to this function line. One by one, every statement will be executed. Now, see, it's an independent body. The independent body then returns the value to its parent who made the call. Okay, so where do we need to make the call? Where we want to use that information, right? We want to use the functionality of that function. Okay, so how can we do that? We can use this function n and a d. Okay, what is happening? See, line by line, scan location, inputs taken n and d. After that, I'm like passing this. Basically, I'm making a call function n and in d, right? I'm passing two variables n and d. Now n will be passed to this n and d will be passed to this d, right? Again, the same operation will be performed on these from line number 8 to line number, I guess, 15. What was happening in the main block. After the computation, the count will be returned, right? Let's try and submit it. So you are not using public, why? Okay. See, as I said, I'm like working in the same class, public class में, right? Public के बारे में इतना मत सोचो. Public ना object oriented part का concept है, right? उसका DSA से लेना देना नहीं.
public, what it helps us do is it basically sets the visibility, right? क्या होता है, अब कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना, तो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक बेसिकली मेक्स द variables, functions, or the data accessible from anywhere in the code, right? Whereas the private, what private does is it basically limits okay, there will be several entities or places from where that code can be called, right? सो उसके बारे में इतना मत सोचो, पब्लिक से यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक ही क्लास के अंदर उसको कॉल कर रहे हैं. तो इवन दो इट्स पब्लिक और नॉट, इट डजंट लाइक इफेक्ट्स द कॉलिंग फ्रॉम द मेन, राइट? दे आर बेसिकली एट द सेम लेवल. ओके, तो आप मॉड्यूल 2 में जब जाओगे तब आपको इसको डेप्थ में पढ़ने का, ठीक है? Hello, sir. who's this? Okay, Who's this? Yes, sir. I'm Mohit. Yeah, Mohit. सर मैं पूछ रहा था कि आप जैसे पब्लिक तो यूज किया नहीं कि उसके तो कोई नीड नहीं है फिलहाल अभी, बट स्टैटिक की भी फिलहाल अगर हम स्टैटिक को ना यूज करें फिर See, what is happening is कि देखो हम स्टैटिक फंक्शन से बना रहे हैं ना. देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, राइट? तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से जब कॉल किसी स्टैटिक फंक्शन से आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, उस फंक्शन का स्टैटिक होना जरूरी. आप देखो क्या होगा, देखो ये देखो मेन स्टैटिक मेन पर्पस क्या है सर? यस सर, ये देखो. ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इशू आता है. ठीक है, अभी एरर आएगा कांट मेक अ कॉल, मतलब समथिंग ऐसा आएगा कि स्टैटिक डिक्लेयर करो उसको, राइट? देखो अब क्या आ गया, नॉन स्टैटिक मेथड फंक्शन इंट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेंट, राइट? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं हम, राइट? अब ये स्टैटिक फंक्शन है, इस फंक्शन से हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो ये नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल नहीं करता, राइट? इसका फिक्स क्या होता है, इसको स्टैटिक करो, ठीक है? ओके. अब देखना स्टैटिक में ही चलेगा. आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आपके क्वेश्चंस वैलिड है, बट इन क्वेश्चंस का ना डीएसएस से एज सच अभी लेना देना नहीं है. आप एक बार मॉड्यूल 2 में जब जाएंगे ना, मॉड्यूल 2 में आपको इस सब के बारे में इन डेप्थ पढ़ाएगा, ठीक है? अभी आपको बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि काम कैसे करती चीजें, काम कैसे करती है वो अभी सीखना है, क्यों करती है वो बाद में सीखना, राइट? ओके, सो एनी या जो आपने फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स वाला क्वेश्चन छोड़ा और जो एरे में वो लार्जेस्ट नंबर वाला छोड़ा, मॉड्यूल टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा? नहीं उसमें नहीं आएगा यार, वो मैं करा दूंगा. वो ना फिर से वही बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं उसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको फंक्शंस के बारे में पता चल जाए, सॉर्टिंग आपकी ना एक बार थोड़ी सी और हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको करा दूंगा, राइट? उसमें कंपैरेटर लगेगा तो वो उसमें टाइम लगेगा समझाने में, राइट? ये मत सोचो कि उसको नहीं करा रहे, उसको कराऊंगा मैं, पक्की बात, वो कराऊंगा, जरूरी है. ठीक, हेलो सर, हेलो सर, सर हो गया सर. टू डी आई में शॉर्टिंग की क्लासेस कर रहे हैं वैसे, एक्स्ट्रा क्लास जो थी, इसमें कोई आइडिया है? भाई कोई स्पाइरल मैट्रिक्स का कोड भेज दो ना चैट में. यार अभी तो करा नहीं है, टू डी आई तो आता ही नहीं. क्लास हो गया ना. hello यस सर. hello, sorry guys, I basically faced some sort of an internet lag, right? Let's continue. Just let me share my screen. Okay, एक सेकंड देना, मैं लॉग इन कर लूँ.
All right, guys, is the screen visible? Yes, sir. Okay, all right. So yeah, please tell me which question should we take the next. सर 2D एरे का कोई भी क्वेश्चन करा दीजिए, क्योंकि सर 2D एरे सही से समझ में नहीं आया, अगर आप कराओगे तो एक बार को आइडिया मिल जाएगा। आपको 2D आरे करना है सर यार लास्ट अभी। सर कुछ भी करा दो यार एक काम करते हैं, आपको 2D लास्ट आरे स्ट्रिंग करना है ना, रुको यस सर, एक सेकंड, आपको 2D आरे करना है ना, तो आप मेरे को यस सर, एक बार पहले तो एक बार मेरे को चैट पे लिख के बताओ कितने बंदों को 2D आरे करना है। ओके सर, आज नहीं कराऊंगा मैं, आपको कल करा दूंगा, राइट, क्योंकि अभी फंक्शन चल रहा है, फंक्शन करना है, तो मैं टाइम Sir, निकाल के आपको वो करा दूंगा। हाँ वही वो कहा ना कि हो चुका है प्रीवियसली, तो हो चुका एक है स्पेशल, सर स्टूडियो। हाँ तो एक बार उसके लिए फिर टाइम देना पड़ेगा, वही है ना कि बाकी का टाइम ना जाए। 2D आ रहे सो आप एक काम करो, मैं ना कल, तो कल मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताता हूँ, आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, उसमें आपको ना 2D आ रहे करो, ठीक है? पर hello sir, string ओके also. सर, या इज इट ओके नाउ, लाइक स्क्रीन पॉज, तो वही मैं कुछ हिला नहीं रहा, Hello. राइट? हेलो। Yes, not only 2D array, string also. We have a lot of doubts in string also. Okay, right. When I was taking the string part, you guys like said कि string हो गया है, right? So it was you guys who like said. Now you guys are Yes, saying कि sir. But it when doubts come है. accident test, we have all the three problems comes from string. It's very hard to code it. Okay, so like what happened is कि you guys like saw the code, you guys were like feeling confident कि okay sir आता है, but when it came to you guys to code, you guys weren't able to figure out how to code. Am We I know right? the formulas, sir, but Yeah. I don't know how to use it. Okay. See, that's like something. See, what I get is like I believe I take the inputs from you guys, right? You guys said कि string कराना हो गया है, तो sir आगे चलते, right? It was you guys. So okay, no worries. Please, like I will be managing some extra class then for you guys कि ठीक है, weekends पे अगर possible होगा तो weekends पे करेंगे, right? अभी मैं श्योरिटी नहीं देता कब होगा, क्योंकि मेरा भी खुद का काम रहता है ना, तो मैं टाइम जब फ्री होगा मैं आपको ना एक बता दूंगा. Right. Are you guys up for an extra class? Only then I will be asking for it. Right. If you guys are not interested, so that there is no point like asking. Okay. See, I would suggest कि अगर मेरा समझ आता ना तभी एक्स्ट्रा क्लास कराना, वरना फिर वही है 30 वी हैव टेस्ट फाइनल. ओके 30 से पहले कराना पड़ेगा. सर कॉन्सेप्ट की क्लास ले लो सर, कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत आ रही है. नहीं मतलब like Mohit, you are writing, sir, you explain in simple manner, so like I explain in simple manner, or I should explain in simpler manner? मैं तो स्क्रैच से उठाता हूँ. So you explain in a simple manner. अच्छा ठीक है, तो मैं आपको लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा. मींस इन इजी. ठीक है, तो ओके, सो अभी क्लास रखते हैं ना, राइट? हेलो ये बात है. या सर, या मेरा डाउट है. हाँ बोलो. हाँ सर, एक लिंक भेज रहा हूँ, जरा देखो ना. सिंपल है ना, क्या इनपुट लेना, दूसरा टाइप से इनपुट लियो करके बोल रहा है. अरे को वो समझ नहीं आया. मेरा फिर वही बात यार, थोड़ा अरे क्लास के एंड तक का वेट करो, ठीक है? उसके बाद एक बार क्लास कंक्लूड दे, फिर आप मतलब दे देना, राइट? ओके सर. ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको करा दूंगा, बट क्लास के बीच में ऐसे एकदम से रैंडम क्वेश्चन कराना मुश्किल है. ओके ओके.
आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए यार, व्हाट्सएप नंबर में ना आप मैसेज करते हैं, तुम कर दो तो लाइक आई बिलीव वी हैव लाइक व्हाट्सएप ग्रुप राइट. चलो मैं आपको नंबर दे Yes, देता हूँ. yeah, sir. Right. See, I'm like अभी बोल से Telegram group thing. Guys, what if like I will be like sharing my Discord ID if that works, right? Discord पे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं. Like WhatsApp पे like WhatsApp पे मैं prefer नहीं करता. Whenever you feel free, we are ready. Telegram group. Yeah, मैं आपको ना Discord ID दे देता हूँ actually. Okay, so yeah, please feel free to pin me on this Discord ID, right? I'm like available at this ID. Okay, whenever I have time, I will be answering your queries. About the extra class, I will be like communicating with the batch manager and trying to fix some extra class and let you guys know, right, in the WhatsApp group as well. Okay, for now, let's basically focus on doing one more problem for the day, right, before wrapping it up. Like, we had a lot of discussion today. Okay, so you guys also like I would request कि यार तभी हो पाएगा जब दोनों साइड से प्रेशर डालोगे बैच मैनेजर पे, right? So you guys also like hit batch manager कि that you guys want an extra doubt class session from like me, only then she would also consider, like he or she, whoever she is, they would consider कि okay, let's do it, right? बहाने मारते हैं. Okay, so yeah, a last problem for the day. Which one should we take? मीडियम छोड़ के कोई बता दो. स्ट्रिंग स्प्लिट का फंक्शन अब कहाँ से स्प्लिट करना है? सब हो गए बाकी फिर वही बात. मीडियम बता दो सर. Yeah, I will be like saying the medium. Yeah, please guys answer key which question should we take? Sir, Yeah. there is a doubt in loops. There is a question in loops. Yeah, okay. Personal doubts I can take after the class, right? Okay, so I was like trying to do one more question for the day from the functions assignment. If you guys are having doubts, or we can like anyone, please let me know, or I will be picking it myself. Right, last index of 1 करें. Last index. Okay, last index of 1. Let's do this. Okay, so let's have a look at the problem description. Given in string S consisting of zeros and ones, find the last index of I present in it. Right, expected time complexity is of and expected auxiliary space is of 1. Okay, we need to figure out at which index this thing is this one is present, right? So we can simply do कि scanner बनाते हैं, y scanner to take the inputs. Okay, let's take the input of the string, right? St is capital str string. Str is equals to sc dot next. Right, after this that we need an I guess we don't need anything else, right? So we just need an answer, right? Int answer, right? Int answer is equals to -1. Why -1? Basically I like to start with an invalid starting position whenever I'm finding something, right? So that I can know if there was an invalid position to find or not, right? Now let's start. How can we find? Let's do this. For int I is equals to, what should be the starting point of it? I can say str dot ngth length -1, right? And we need to do that while I is greater than or equal to 0, I -1. Okay, now if
str यहाँ पे str डॉट होगा हाँ यहाँ पे str डॉट होगा, थैंक यू, टाइपिंग एरर हो गया। str डॉट कैरेक्टर एट, राइट, char at I guess I is equals to 1, right, character वाला 1, यहाँ पे simple 1 काम नहीं करेगा, character वाला 1, in that case please make the answer as I and just break out of the loop, right, because we found the first one and after that we don't require to do anything else, right, so just do a system dot out dot println, right, println and answer. Now this is the basic naive way or the way that we are using so far to do it, right? We will be also seeing how to like do it in code. Acha. एक second, answer में ये यहाँ पे डाल दिया. Okay. Line number 12, routine compilation error. Okay, sir, is it also right now? एक second, yeah, let me just have a look. कि scanner s is equals to new scanner, string s is equals to string dot next system dot all last index of 1. Last index of 1 सही है, right? सही है. Okay, so we are getting the right answer. Yeah, got it. But now it's a question of like functions assignment. So let's basically try and do it using the functions also, right? Again, a simple approach. Static banao. Static. What is that we require to send? We need to send an integer data to basically return the index. So return function, right? String pass karenge, right? String str. Okay. What is the computation that we actually need to do? We need to do this, right? To control x, control v, right? And at the end, we just need to return the answer. Got it? Now, simple call to the function passing str. Okay, so time complexity of this code is O of n. Yes, it is O of n. Why O of n? Because see, it's a single for loop running from I is equals to string dot length minus 1, right? Basically covering the n digits of the string, right? N का मतलब होता है कि single iteration में काम होना चाहिए. यहाँ पे we are like using the single iteration on the string itself, right? So that's why it is O of n. Got it? So let's try and do this. Okay, so let's try and run this code 0001. Okay, again same thing, 4. Okay, all test cases pass. Right. So now the problems that we discussed today, any doubts you have now? Any doubts? So yeah. Which one is better to attend the question, with function or without function? Can you just speak once again? Your voice was really low. Hello. Yeah. So which one is better to attend the question, with function or without function? Okay. See, it's a pretty good question, right? If you guys remember in the initial times when we like started with module 1, I basically by mistake I showed you like I didn't right at that time know key. Okay, so that wasn't the case. I basically told you guys, see, functional programming is much better. Now, why it's much better? See, if we talk about the code that we wrote in finding the factorial, right? Pretty easy question, pretty easy stuff. But that question basically helps you understand the power of functional programming, right? If I was to solve that problem, okay, so let's just basically navigate to that problem and then let's talk about it, right? So let's say calculate NCI. In this problem, you can see I'm basically leveraging the power of functional programming to like basically space the access typing or the code repetition. Now, if I was to do it in a simpler way, right, as we were doing all along, I was to write an independent code for finding the n factorial, r factorial, and n minus r factorial. Agreed. I would be writing 3 for loops to basically find the 3 values. Now, using the functional programming, I'm writing just once and using it several times, right? See, the motto of functional programming is write once, use n number of times.
right? Whereas if you like try to write the code in a single block, you have to like handle every case at your own, right? There is no concept of like functions or that some sort of thing, right? This that basically helps us perform the same operation again and again apart from the loop. Now, even though if I do a loop, this problem can't be handled because in loop, the input variable or the dependent variable on which the actual calculation is dependent is changing on every time, right? See, first it's finding out the n factorial, then the r factorial, and then the n minus r. So this is the question which like helps you understand, okay, so why functional programming is much more better and much more preferred, right? Also, you can like logically think, let's say in an industry, we write a code of, let's say, thousands of no, if this code was of a single block and I just like by mistake, right, let's say key I'm like finding the factorial of thousands of numbers, right? Now, if I was to write that in a single block, I would have to write thousands of line, right? And let's say key the mathematicians came with the new logic to find the factorial in a much easier way that helps us to prevent the much computation power, right? Now in that case, I had written like thousands of lines. Now I need to manually change those thousands of lines to the most optimized code. Whereas in the functional programming, I have written a function. Now I just need to make a change in one place, and that will be reflected at the basically thousands of lines, right? So that's why that's why we like really prefer to use the function. Now, on 30th, when you will be having your final examination, you will be expected to write a functional code. Okay. Now, many of you guys have seen there are several platforms such as LeetCode, Codeforces, right? There they don't like want you to write the entire Java code, right? They just want you to write a function that performs the operation, right? Why is that so? Because see, the input and output they handle on their own. They just want you to like focus on the core working stuff, right? You can see the core working part was this factorial find them, right? We extracted it out. So this is where the main DSA comes in, right? So if you are able to build the actual core logic on which the question is dependent, that's the working of DSA. Apart from this, you can see taking inputs. It's not that like flexible, right? Input ही लेना, वो सबको पता है कि input कैसे लेना, but whether you are able to figure out the core working logic to find the n factorial and use those operations, that is like pretty important. सर इस क्वेश्चन में हाँ int I equals to x का लॉजिक नहीं समझ में आया. int I equals to x का int x जो आप बनाया. अच्छा देखो, इसका लॉजिक समझने के लिए ना आपको फंक्शंस की क्लास का एक बार लेक्चर फिर से देखना चाहिए, अगर आपने लेक्चर अटेंड करा था. फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ना हम रिटर्न टाइप देते हैं सबसे पहले, राइट? हमारा रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग. रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नाम आता है और उसके बाद उसके ना सिग्नेचर आता है, राइट? कि व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट विल दिस फंक्शन एक्सेप्ट, राइट? इस फंक्शन को क्या क्या वेरिएबल मिलने चाहिए. सो आई हैव लाइक बेसिकली स्पेसिफाइड कि ओके दिस फंक्शन विल रिसीव एन इंटीजर वेरिएबल named as x, right? So see, I basically specify with the integer data type and the name, right? So now what happens is ki whenever I make a function call, see, this is the function name fact. I have called this fact here on line number 24. You can see I have made a fact call. How do I know a call? The fact function name is followed by these brackets. Now inside that bracket is the variable that is to be passed, right? Now this n will be passed to the function definition and the value of x will be replaced with this n, right? Or you can say in other terms कि n की value x को मिल जाएगी, ठीक है? और ये जो होता है ना, ये डिक्लेरेशन का भी पार्ट होता है. आपने देखा यहाँ पे मैंने कहीं पे int x नहीं लिखा और मेरे को एरर नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे int x लिखा. सो आई हैव बेसिकली डिक्लेयर्ड इट कि दिस फंक्शन विल बी एक्सेप्टिंग द वेरिएबल x. सो दिस x इज नाउ अवेलेबल इनसाइड दैट फंक्शनल बॉडी. ओके, नाउ what is happening कि factorial कैसे निकालते हैं, n into n minus 1, right? n into n minus 1, right, into n minus 2, right, and so on up till n becomes 1, right? So you can see कि मैंने x को शुरू करा i को शुरू करा x से, और let's say कि n से शुरू करा, ठीक है, n से, right? अगर मैं इसको n भी करके दिखाऊंगा आपको तब आपको शायद समझ में आए. सर n समझ में ही आ रहा था क्योंकि पिछले जो फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन किए तो उसमें n ही लिए थे. हाँ, इसीलिए सर, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी कि मतलब नहीं, वो
हाँ मतलब यहाँ पे तो आप वेरिएबल को कोई भी नाम रख दो ना, उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है, n हो x हो कुछ भी हो। ओके और राइट। यहाँ हम लोग जब मतलब वैसे यहाँ इंट n ले लिए, n वेरिएबल ले लिया, उसके बाद यहाँ जब रिटर्न किए तो सारी वैल्यू वैनिश हो गई, इसलिए हम मेन में भी n ले सकते हैं फिर से। वैनिश हो गई मतलब कि फिर हम लोग मतलब कि मेन में भी फिर से एक वैल्यू n ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ इनपुट लिए हैं इंट n मेन में। हाँ देखो क्या होता है, वेरिएबल के ना स्कोप्स होते हैं राइट। द वेरिएबल हैज लाइक फंक्शनल स्कोप एंड द लाइक फंक्शनल स्कोप की बात करते हैं, ठीक है, ग्लोबल स्कोप छोड़ो। अगर मैं इस फंक्शन राइट इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, तो उस वेरिएबल का फंक्शन स्कोप इस वेरिएबल के अंदर राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे ये n यूज हुआ, तो इस फंक्शन n इस n की वैल्यू को मैं इस ब्रैकेट लाइन नंबर 29 से लेके लाइन नंबर 19 से लेके 29 तक एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद एक n मैंने यहाँ डिक्लेयर करा, ठीक है, लाइन नंबर 10, इस n को मैं 10 से लेके 16 तक एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये दोनों n इंडिपेंडेंट है राइट, तो ये अलग अलग फंक्शन में, तो इसलिए मैं अलग अलग बार इनको डिक्लेयर कर सकता हूँ। ओके यस सर, थैंक यू। या okay guys, so I guess we did 3 problems for the day. Now I will be like taking your doubts if you guys have any. सर Okay. Yeah. सर वो तो फैक्टोरियल में जो लाइन नंबर 23 से 25 तक का जो लॉन्ग वाला लिखे है, लाइन नंबर 23 से 25 तक, यस। हाँ, तो सर ये 3 अलग अलग वेरिएबल लिखने के जगह पे अगर हम लोग एक लॉन्ग में सारे उसको अगर लिखते हैं तो क्या स्पेस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? स्पेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर अटेंड कर लिया? ये सर देखो स्पेस क्या होती है ना, स्पेस जैसे हम बात करते हैं ऑफ 1 होता है, ऑफ n होता है राइट। ऑफ n का मतलब है कि वी डोंट नो हाउ मेनी वेरिएबल्स वी विल बी डिक्लेयरिंग, बट एट मैक्स वी कैन डिक्लेयर एन n। नाउ n is a generalized space complexity right, कि there might be an n variables. Now when we talk about space complexity of 1, that basically means कि okay, so now there are constant variables right, ये को ऑफ n में ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इससे कम भी करोगे तो कोई फंक्शन नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मैं आपको बताऊं, आप कोडिंग पे देख रहे हो, ये थोड़ा सा कोडिंग से हटके अगर आपको समझना कि इंटरनली जब काम हो रहा होता है ना, कंपाइलर रजिस्टर्स पे काम करता है राइट, तो वहां पे रजिस्टर्स पे जब चीज चलती है तो वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करती है, आप कितने वेरिएबल ले लो राइट। डिपेंडेंट करता है कि आप कितने वेरिएबल्स बना रहे हो राइट। अगर आप एक ही वेरिएबल में 4 काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी उतना ही इफेक्ट डालेगा। अगर आप 4 वेरिएबल बना के एक एक काम कर रहे हो, वो भी उतना ही इफेक्ट डालेगा राइट। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 4 वेरिएबल एक फिक्स क्वांटिटी, आपको पता है 4 वेरिएबल बनाए, ठीक है, 3 वेरिएबल बनाए n r और z बनाए, ये फिक्स क्वांटिटी। फर्क तब पड़ता कि जब मेरे को पता ही नहीं कितने वेरिएबल बनेंगे। लेट्स से कि आई एम कॉलिंग अ सेम फंक्शन हंड्रेड ऑफ टाइम राइट, आई डोंट नो, आई एम सेइंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम, आई डोंट नो कि 200 है, 300 है, 400 राइट। इन दैट केस इट्स अ वेरी लाइक फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ वे। सो इन जनरल वी से कि ओके सो ऑफ n हाई इसी टाइप का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी राइट। सो उसमें फर्क पड़ता है। इसे अगर आप 3 लाइन लिख रहे हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 लाइन ऑफ 1 में कंसीडर होगी कि आपको पता है सिर्फ 3 ही वेरिएबल मेरा फंक्शन यूज कर रहा है राइट, तो फिक्स्ड नंबर है वो। ओके सर। राइट या सो आदर्श सर ने तो ये बताया, जो लाइन नंबर 10 में जो अपन ले रहे हैं ना साइन 10, वो वही हाँ चीज ले रहे हैं जो अपन मेन से ले रहे हैं, मतलब n r z वगैरह से। हाँ, तो मैंने आपको वही बोला ना। आदर्श सर ने देखो पता आपको क्या बोला, आदर्श सर ने आपको बोला होगा कि हम जो चीज यहाँ से पास करते हैं ना, वही चीज हमें यहाँ मिल जाती है राइट। तो उनका क्या मतलब था कहने का कि हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या पास करा, n पास करा राइट। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि लेट्स से कि आई एम कॉलिंग हियर ऑन n, सो द n इज बीइंग पास, नो, it's an alias for n right, or the value that I'm passing. You can see कि I'm also passing r, यहाँ पे r है, यहाँ n है, कैसे पता चला? नहीं, ये वाला जो n है ना, इसका स्कोप सिर्फ इस फैक्टोरियल फंक्शन में है राइट। तो ये सिर्फ इतना वेरिएबल वैलिड है राइट। इस n को मैं कुछ भी ले लूं, मान अब क्या बताऊं, मैं l ले लूं राइट, सिर्फ l ले लेता हूं मैं। तो अब ये जो l है, ये सिर्फ यहाँ से लाइन नंबर 10 से लेके यहाँ तक, ये वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के लिए वैलिड है बड़ी, इसके ऊपर नीचे उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मैटर करेगा। यहाँ से जो वैल्यू पास होगी ना, वो उसके पास चली जाएगी। लेट्स से कि r की वैल्यू 5 थी, देन l विल बिकम 5 राइट। l विल जस्ट अडैप्ट ओके सर, वो l में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वाइल नहीं, इसको कंफ्यूज मत करो, वाइल में हो जाएगी नहीं, ऐसे ऐसे इसको ना लाइक किसी से सिमिलर मत करो, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको सिमिलैरिटी ढूंढ रहे नहीं है। इट्स जस्ट it's very simple कि the value that we are passing gets passed on to that variable right,
इसमें कोई सिमिलैरिटी ऐसे मत ढूंढो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? आप कह रहे हो वाइल, वाइल से आप इसको कैसे सिमिलर कर? एल नहीं सर, एल एल में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी एन होगा। हाँ अच्छा, सॉरी, फिर वो मेरे को सुनने में गलती है, सॉरी। या सर सो एन का कॉपी एल में चला जाएगा ना सर? हाँ, एन का कॉपी एल में चला, राइट? आप ओके। देखो, मैंने 3 कॉल करी, एन पे कॉल करी, आर पे कॉल करी, एन माइनस आर पे। सो इन तीनों की इंडिपेंडेंट कॉपीज हर फंक्शन कॉल पे करी, राइट? तो पहला कॉल क्या हुआ, फैक्टोरियल पे गया। फैक्टोरियल पे एन की वैल्यू पास हुई, एन की वैल्यू एन को मिल गई, वो फैक्टोरियल ने उसका काम करके फिर एन को दिया, राइट? पहली फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो गई, देन द सेकंड फंक्शन कॉल विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज फैक्टोरियल। नाउ आर विल बी पास, आर की वैल्यू एल में चली गई। अब ये वाली फंक्शनल कॉल और पहले वाली फंक्शनल कॉल जो एन के लिए हुई थी, वो दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। ओके ओके Sir, can I ask about doubt about diagonal sum? Diagonal sum, yeah please. Yes, Right. sir, can I share my screen? Yeah, sure, you can just right, yeah, please share your screen. Okay, Mehran, Sonu has shared the code for your question, right? Please have a look and if you have any doubts, let me know. वो क्वेश्चन में तो n ही नहीं है सर, इनका कोड में तो n है, द टोटल नंबर ऑफ अरेज तो नहीं दिया है, दूसरा मेथड में सोचो करके बोला क्वेश्चन में। n ही नहीं है? हाँ, एक कोड चेक करो ना क्वेश्चन। एक सेकंड just a second. Yeah, someone was, I guess, sharing the screen, right? Please go ahead, share your screen. कैन आई शेयर माय स्क्रीन? Sir, actually उससे share नहीं हो रहा है, एक share सेकंड का option नहीं आ रहा है। Okay, so Mehran, you are like having a question of finding the maximum element, right? Maximum element find karna in the given array. Okay. Yes sir. So, like I guess the guy who shared the question answer, right? एक second, यार, एक second. Chat. Yeah, Sonu, I guess, shared, like he is creating an n, right? That is the number of integers he will be taking in, right? And then he is creating an array, taking in the inputs, maximum निकाल रहा है। सही तो कर रहा है? क्या कर रहा है? आपकी कोड में क्या दिक्कत है? Like, what is the issue that you are facing? सर वो क्वेश्चन देखो ना, उसमें तो खाली अरे का नंबर लेने के लिए नहीं बोला है और n नहीं है उसमें। n नहीं लेंथ है? के बिना तुम इनपुट ले लो और लार्ज मैक्स नंबर फाइंड करो, ऐसा है क्वेश्चन। m और n दोनों सेम है, वो 3 सर। एक सेकंड एक सेकंड। He's saying कि given an array of integers, you need to find its maximum value element, right? The integer input contains n space separated integers, right? तो वो बोल तो रहा है कि n space separated integers है, उसने तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है। जो सैंपल इनपुट में तो n नहीं है ना सर? सैंपल इनपुट में n नहीं है? नहीं है सर। ओके, एक सेकंड, 1 2 3 4। Okay, so I guess then it is like basically an error with the maximum element। रुक जाओ, मैं इसकी ना फोटो खींच के रिपोर्ट कर देता हूँ उसको, राइट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना साइज के आप कैसे array बनाओगे? हाँ सर, और एक मेथड तो है इसके लिए, स्ट्रिंग पे ले लो और स्प्लिट करके अरे में ऐड करते ही आओ, ऐसा। नहीं, वो देयर इज वो फिर no size of the array, you have to use the other way to read the inputs, ऐसा है ना? there is no size of the array given beforehand, you will have to use some other way of reading। हाँ, तो फिर इसको string में convert कर दो ना, like basically take an यार इसको कैसे read कैसे करोगे? ये तो you have to like use some other way to of reading input values। एक सेकंड है ना, मैं आपको इसको ना देख के बता दूंगा, राइट? मेरे ख्याल से इसमें ना कुछ होना चाहिए इसके लिए। ओके, आप मेरे को, मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में रिटर्न मेरे को याद दिलाना, मतलब मैक्स एलिमेंट निकालना, उसमें साइज नहीं लेनी, राइट? ओके, या समवन इज शेयरिंग, लाइक विवेक इज शेयरिंग स्क्रीन। या विवेक प्लीज। हेलो हेलो
Vivek, you are not audible. Vivek, you are not audible. Yeah. Yes, sir. Now it is audible. Yeah, you are audible now. I don't know why when I'm sharing screen, my voice all mutes. Okay. सर मतलब अभी डायगोनल निकालने के लिए जब एक बार डायगोनल निकालेंगे तो समझ लो जो 3 डायगोनल लगाते हैं बीच वाला पार्ट मैंने ले लिया और सेकंड टाइम मेरे को उसको नहीं लेने का, तो उसके लिए कैसा मतलब प्रोग्राम करेंगे? See, in that case, you basically just need to do कि पहली बार में तो आप एक for loop चलाओगे ना कि where I and j are equal, please take that element. So basically yes. वो diagonal हो गया 0 0 से और n cross n तक का, right? हाँ. ऊपर से नीचे from I guess top left to bottom right? Yes, sir. Yes. Now the second diagonal that you will be taking will be from top right to bottom left. Okay. Left. Yes, उसमें sir. क्या होगा कि basically you will be like considering the summation of I and j that should be equal to n, right? Yes. तो I उसकी प्रॉपर्टी होती है कि I और j का सम करते हो तो वो n के बराबर आता है, ठीक है? Okay. तो आप उसमें चलोगे तो सेकंड फॉर लूप आप वैसे लगाओगे, आपको इसमें ना शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसमें ये फॉर्मूला लगा दो कि एन, लाइक आप खुद देखो ऊपर क्या होगा, एरे रो 0 होगी, कॉलम नंबर क्या होगा, n होगा, सम N होगा. करोगे तो वो n के बराबर आएगा, राइट? आप एक Yes. एलिमेंट नीचे आओगे तो एरे एक बढ़ जाएगा, कॉलम एक कम हो जाएगा, तो दे विल बी लाइक ऑलवेज समेशन विल बी इक्वल टू n. तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी डायगोनल की, दैट इज आई इज इक्वल्स टू जे एंड एक तो ये हो गया डायगोनल, एंड द सेकंड वन इज n प्लस लाइक सॉरी आई प्लस जे इज इक्वल्स टू n. गॉट इट? नाउ Yes, sir. पहले क्या करेंगे, पहले आई इज इक्वल्स टू जे वाले से हम एक डायगोनल का सम निकालेंगे, ठीक है? और उसके Yes, sir. बाद दूसरे डायगोनल से जब हम निकाल रहे होंगे ना कि देयर आई प्लस जे इज इक्वल्स टू n, उसमें से हम सिर्फ इफ केस और लगा देंगे कि व्हेन एवर आई इक्वल्स टू जे, राइट? क्योंकि देखो दोनों डायगोनल्स में कॉमन वही एलिमेंट आएगा जिसमें आई और जे बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पहला डायगोनल काम ही इस कंडीशन पे कर रहा है कि आई और जे बराबर होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. तो ये चीज चेक कर, ये एक अगर आप चेक केस कर देते हो और सिर्फ क्या करना, इफ व्हेनेवर लाइक यू आर फाइंडिंग द समेशन फॉर द सेकंड डायगोनल, जस्ट डू कि इफ i इज इक्वल्स टू j, सिंपली डू अ कंटिन्यू, राइट? कंटिन्यू कर देना, तो उससे वो वाला एलिमेंट जो है ना आपके सम में ऐड नहीं होगा, उसके अलावा सारे सम में ऐड होगा। समझ आया? Yes, sir. समझा. ठीक है? ये सर मेरा अप्रोच ऐसा था कि मैं उसका पहले सम निकाला, फिर उस मैट्रिक्स को रिवर्स किया, फिर डायगोनल का सम निकाला. हाँ, तो मैंने आपको वही उसका ट्रिक बता दिया ना, उसका ट्रिक क्या होता है, वही प्रॉपर्टी मतलब. होती है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? ओके सर, ट्राई करो. हाँ, इसको ट्राई करो, कुछ होगा तो बताना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। Right. Yes. Now, is there anybody else like who has like some sort of an doubt who wants to discuss anything? Any doubts? Yeah. About the extra class also, guys, please like also ask your batch manager to like क्या कहते हैं like arrange a extra doubt session, right? तो आप डिमांड करो, फिर आपको मिलेगी, राइट? मैं भी ट्राई करता हूँ, एक बार मैनेजर से बात करनी थी। ओके, शुभम, रिकर्जन, रिगार्डिंग रिकर्जन, बड़ी रिकर्जन के लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही आता है। इनिशियल फेजेस में ऐसा मत करो कि सर नहीं आ रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएगा, राइट? रिकर्जन इज द टॉपिक दैट इज द मोस्ट हार्ड इन द मॉड्यूल 1, राइट? रिकर्जन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हम देखेंगे जब रिकर्जन की असाइनमेंट करेंगे, राइट? थोड़ा सा हमें थोड़ी सी क्लासेस लंबी करनी पड़ेंगी, राइट? 2-2 घंटे तक, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, राइट? तो टेंशन मत लो, रिकर्जन अच्छे से करा दूंगा आपका। ओके, सो या प्लीज ट्राई। हाँ सर, हम लोग बाय चांस यूजिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसमें अगर एरे को कॉल करते हैं, तो उसमें उसका लेंथ को भी अलग से पैरामीटर में लेना जरूरी है या फिर डायरेक्टली हो जाएगा वो?
लाइक उसको लेंथ को लेना जरूरी भी नहीं है और जरूरी भी है, जरूरी नहीं है यार। आप उसको पास मत करो, आप एरे पास कर रहे हो ना। अगर आपको Yes, sir. लेंथ की जरूरत पड़ती है तो आप जिस फंक्शन में पास कर रहे हो उसी फंक्शन में आप सीधा एरे डॉट लेंथ करके निकाल लो, आ जाएगा। और सर डायरेक्ट ले सकते हैं ना उस फंक्शन के सर अंदर में। हाँ डायरेक्ट आप देखो कोड कैसे मैनेज करते हो वो आप पे है, राइट। आप उसको कैसे भी करो, आप अगर उसको इंडिपेंडेंटली पास करना चाहते हो एक वेरिएबल की तरह वो भी वैलिड है। अगर आप पास नहीं करना चाहते सिर्फ एरे पास करना चाहते हो और अगर आपको लेंथ की जरूरत पड़ती है उस कोड के अंदर तो आप सीधा एरे डॉट लेंथ कर लो, वो आपको लेंथ मिल जाएगी। ठीक है। ओके सर। सर या कुणाल। सर रिटर्न के साथ वो एरे को कैसे, एक लाइन बताओ ना सर, रिटर्न के साथ एरे क्या लिखे वो एरे रिटर्न हो जाएगा। अच्छा देखो रिटर्न के साथ एरे कैसे लिखे, तो आप जैसे लिखते हो ना इंट, लाइक इंट फंक्शन देन वेरिएबल, तो बस जहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो ना फंक्शन को उसमें इंट के आगे 2 ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है ना पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग, अगर मेरे को लॉन्ग की एरे देनी रिटर्न करनी है तो मैं बस ये कर दूँ, राइट। अब ये एरे लॉन्ग की एरे रिटर्न करेगा, ठीक है, बिना ब्रैकेट्स की लॉन्ग का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, उसके साथ ये लॉन्ग की एरे डिक्लेयर, राइट। अब यहाँ पे अगर आंसर लेट्स से आंसर भी एक एरे होती तो बस यहाँ पे सिर्फ आंसर मेरे को रिटर्न कर, ठीक है। ऐसे एरे रिटर्न हो जाती है। उसके बाद एरे की कैसे ओके सर, कंपटीशन करनी है वो आपको खुद ओके। देखना, राइट। बस इतना सा लॉजिक होता है। या सर रिटर्न टाइप का समझ गया है बट वॉइड का थोड़ा कंफ्यूज। सी शुभम, वॉइड इज की वॉइड इज बेसिकली की ओके आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, राइट। समटाइम्स की आपको लेट्स से स्वैप का फंक्शन बनाना है, आप स्वैप का फंक्शन बनाते हो तो आपको सिर्फ वैल्यू स्वैप करनी है, आपको रिटर्न करने की कुछ जरूरत थोड़ी है। तो उसमें सिर्फ वॉइड बना दो। वॉइड सिर्फ देखो फंक्शन कभी भी डिक्लेयर करते हो ना आपको उसके साथ एक डेटा टाइप देना पड़ता है। कभी कभार हो सकता है कि फंक्शन को कोई जरूरत ही नहीं है रिटर्न करने की, डिमांड लाइक उसकी नेसेसिटी नहीं है, उस केस में आप सिर्फ वॉइड डाल दो तो वो काम कर जाता है, राइट। वॉइड इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू रिटर्न नथिंग। ठीक है, सिंपल सा बात। ओके, उसको कंफ्यूज मत करो। वॉइड सिर्फ तभी यूज होगा जब आपको पता है कि यार इस फंक्शन की जो कंपटीशन है उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। Okay, so I guess that's pretty much it for today's class, right? Let's just wrap it up. Tomorrow we will be meeting again. Like tomorrow, I guess I will be completing the functions, and then we will be like going to the required topics of recursion and all. Okay. All right, guys. So we'll see you tomorrow. All right. Okay, sir. Yeah. So yeah, please keep on practicing. Please collect all your doubts. We will be like again having some sort of a time for discussion right at the end like this because 10 दिन बचे हैं, अब आपके doubts clear करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? All right. So yeah, guys. We'll meet tomorrow then.